हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम अध्याय 2 का भाग 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है, चैप्टर 2 का नाम है बीजारोपण, प्लांटिंग द सीड। तो चैप्टर 1 के एंड में हमने समझा था कि कैसे प्रभुपाद फाइनली जब डेविड एलन के साथ रह रहे थे बावरी में, तो डेविड जो थे उन्होंने वो ड्रग एडिक्ट थे। वो प्रभुपाद ने अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट किया उन पे, लेकिन फिर भी वो भक्त नहीं बने और बहुत ही मतलब रोश में आगे कुछ भी कर रहे थे। ड्रग एडिक्ट थे तो प्रभुपाद पे अटैक भी करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो एक पागलपन में, मतलब उनको प्रभुपाद से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर प्रभुपाद को बावरी भी छोड़ना पड़ा। और अब काल और उनकी वाइफ और सब जो न्यू जो क्लासेस सुनने आते थे प्रभुपाद की, अब उन्होंने मिलके एक जगह ढूंढी, 26 सेकेंड एवेन्यू। और वहां पे वो सारा सामान लेके शिफ्ट हो रहे थे प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद को हेल्प कर रहे थे सारा सामान उठा के। एक पूरी परेड बना के वो चल रहे थे और बीच में वो इतना थक गए, उन्होंने कहा कि हमने गाड़ी क्यों नहीं की। लेकिन प्रभुपाद कॉन्स्टेंटली चल रहे थे, जबकि प्रभुपाद की सबसे ज्यादा उस टाइम पे उन सब में एज थी। तो अब यहाँ पे आज की क्लास में हम सिर्फ आज इतना ही डिस्कस करेंगे कि प्रभुपाद का जो, जहाँ प्रभुपाद अब रह रहे हैं, 26 सेकेंड एवेन्यू। एक्चुअली हमें तो एडवांस में ही पता है कि अब यही है जहाँ से इस्कॉन स्टार्ट होने वाला है। सो इट्स लाइक अ बर्थ प्लेस ऑफ इस्कॉन। तो इस जगह की अभी डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने दिया है। तो अब प्रभुपाद जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे अभी अब पड़ोस अच्छा है। जैसे पहले हमने जाना कि प्रभुपाद बावरी में थे, बाहर सब बेघर लोग थे, ड्रग एडिक्ट्स थे। लेकिन अब प्रभुपाद जिस जगह पे हैं, पड़ोस में भी सब अच्छा है। आसपास बहुत रॉक शोज वाले क्लब्स बने हुए हैं। उसके बगल में एक 4 माले की बिल्डिंग है। उधर कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, कहीं पे एक फ्यूनरल है। उसी सेम लाइन में एक चर्च है। और जो 26 सेकेंड एवेन्यू है, वो 6 माले की बिल्डिंग है, जहाँ पे एक फायर एस्केप बना हुआ है और वो पूरा फायर प्रूफ घर बना हुआ है। और ये मेन रोड पे है 26 सेकेंड एवेन्यू। बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत टैक्सी ऑटो ट्रक पूरा दिन वहां से निकलते रहते हैं प्रभुपाद के डोर से। और मतलब सुबह से शाम तक ट्रैफिक का आवाज रहता है। और जहाँ पे 26 सेकेंड एवेन्यू है, उसके नॉर्थ में ही एक और स्टोर फ्रंट है, वो लॉन्ड्री है। और ये जो था, मैचलेस गिफ्ट शॉप लिखा था यहाँ पे। और उसके नीचे बहुत सारे मूवी स्टार्स के पोस्टर बने हुए थे, जो बाद में हटा दिए थे। और एंट्री कैसी है, बहुत ही पतली सी है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, बहुत ही डल सा पेंट हो रखा है। और और टू द लेफ्ट ऑफ द गिफ्ट शॉप्स विंडो, अभी जो जिस दरवाजे से एंट्री है, उसके लेफ्ट में जो विंडो है ना, उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है कि वहां से कैसे अंदर ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। यहीं पे एक्चुअली प्रभुपाद ने एक पोस्टर बना के, हैंड रिटन पोस्टर बना के लिखा था कि यहाँ भगवत गीता क्लासेस होती हैं। उसके बाद अंदर एक छोटा सा सिंक है और वॉशरूम है। और एक दरवाजा है, उस स्टोर फ्रंट में एक दरवाजा है जो कोर्टयार्ड की तरफ जाता है, बाहर एक आंगन की तरफ। कोर्टयार्ड में गार्डन है, पेड़ है, एक छोटा सा पिकनिक टेबल है, बीच में बर्ड हाउस है। अभी एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी 26 सेकेंड एवेन्यू का, तो आपको वो एक दर्शन हो जाएगा। बैक ऑफ 26 सेकेंड एवेन्यू, अभी प्रभुपाद के रहने के लिए ये जो स्टोर फ्रंट था, ये क्लासेस के लिए था। इसके पीछे प्रभुपाद के रहने के लिए एक जगह रेंट पे ली थी, सेकंड फ्लोर पे। और जहाँ पे अब प्रभुपाद रहेंगे भी, और अपना कार्य भी करेंगे, और अपना वर्शिप भी करेंगे, भगवान को ऑल्टर स्टैब्लिश करके वर्शिप करेंगे। उसको प्रभुपाद पूरा साफ करते हैं, सारे उनके हेल्प करते हैं उस वक्त जितने भी बॉयज थे। उसके बाद प्रभुपाद जिस रूम में रहने वाले हैं, उसके पीछे एक और रूम था, उसको प्रभुपाद एक ऑफिस बनाते हैं। वहां पे एक कुशन लगा देते हैं जिस पे एक एलिफेंट बना हुआ था। एक मेटल सूटकेस होता है, उसको प्रभुपाद डेस्क की तरह यूज करते हैं। उस पे टाइपराइटर रखते हैं। और प्रभुपाद एक भागवतम का सेट सैफ्रॉन क्लॉथ में लपेट के अपना अलमीरा में रख देते हैं डेस्क के सामने। और जिस वॉल पे प्रभुपाद जहाँ पीछे बैठ रहे थे, जो पीछे उनके वॉल थी, उधर एक कैलेंडर प्रभुपाद लगाते हैं, जहाँ पे कृष्णा है
और नेक्स्ट रूम में प्रभुपाद एक ऑल्टर एस्टैब्लिश करते हैं, वहाँ पे पंच तत्व का फोटो रखते हैं और एक भगवान विष्णु का अनंत शेष के साथ एक वो लगाते हैं, कपड़े सुखाने की एक रस्सी लगाते हैं प्रभुपाद उस रूम में, और सब कुछ बहुत स्वच्छ है। और प्रभुपाद वहां से खिड़की के बाहर देख रहे हैं और प्रभुपाद पूरा नज़ारा देख रहे हैं उस वक्त न्यूयॉर्क का। और अभी प्रभुपाद यहाँ पे है, लेकिन हमें पता है यहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा है, तो अभी प्रभुपाद को आइडिया नहीं है कि नेक्स्ट मंथ का यहाँ पे रेंट कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे एक पिक्चर जो मेरे को रिजेम्बल करती हुई दिखी, जो प्रभुपाद ने हमने वॉल पे लगाई थी, मैं वो एक शेयर कर रही हूँ। ये प्रभुपाद एक वॉल पे पिक्चर लगाते हैं, जिस वॉल पे प्रभुपाद बैठते हैं, जिस वॉल के सहारे प्रभुपाद बैठते हैं, उधर प्रभुपाद एक ऐसी कृष्णा की पेंटिंग लगाते हैं। तो ये कुछ 26 सेकेंड एवेन्यू का हमने आज लुक जाना। एक छोटा सा, मैं ये सुनने में उतना इंटरेस्टिंग शायद ना लगा हो, लेकिन मैं एक वीडियो शेयर करूंगी जो देख के आपको पूरा दर्शन होगा। सो जस्ट अ मिनट। My voice is coming. यस माता जी। Hare Krishna. Thank you so much. माता जी मैं एक वीडियो दिखा रही थी 26 Okay, सेकेंड। okay. So अभी आ रहा है? Yes, हो गया. ठीक है. Hare Krishna. I'm Nandi Mukhi, and I'm one of the devotees who serve here at 2nd Avenue. And we just had a festival, so the storefront looks a little much like a warehouse today, but we'll give you a tour just the same. It's only 500 square feet, and the surfaces have all been changed. Ceiling has been replaced with an acoustical tile. The floor has been replaced because there was a rotten spot forward near the asana there. And all the walls have been redone because they were crumbling. This served as a warehouse, a storage room for an antique store for 12 years. And it went to great disrepair, but we've been trying to put it back in some shape or other. And the walls were what before? The walls were plaster on brick, and the plaster just crumbled. The bare brick was showing. It was in very bad repair. So it looks presentable now because we use it as a preaching center, and we also have a few touches to bring out the tirtha mood of the place. Old photographs. These on the wall here, this is Prabhupada and Brahmananda exiting from the back apartment, his apartment in the rear, crossing the courtyard, ready to come in for an evening program. This is the sign posting classes, evening classes. And the bottom pictures of several guests entering for the classes. This is a picture of a wedding. This is Gargamuni's wedding. Jadharani is dancing behind him. You can see the light in the front door in back of the devotees. This is Prabhupada seated, I believe, on the Bowery. And Prabhupada in Tompkins Square Park. This is Prabhupada. This is the only picture showing Prabhupada outside of 2nd Avenue here. This is in San Francisco at the airport. Famous photo. Again, Tompkins Square Park. Tompkins Square Park. This is Brahmananda. And I don't know exactly who else is dancing with him. We had a kirtan just the other day. Many, many devotees in Tompkins Square Park. It's part of World Harinam Day. This is Prabhupada giving his obeisances. I believe this is either here in the temple room or in his apartment in the back. I can't tell exactly. These are clips from the old Happiness at 2nd Avenue video. And this is Prabhupada walking around the East Village alone. What a sight that would have been. And this is Prabhupada seated between these two windows under another Radha Krishna painting, a little later actually than this one. And the curtains over the windows, they had an interesting way of decorating the storefront just to make it look a little more exotic. And again, this is probably the same evening, Prabhupada giving class. And again, I think this is either in the storefront or his apartment. I think it must be, I don't know which, actually. And so these are old paintings that were painted in 66 and 67 by
Indira, this is by Indira. And Jadharani. These are one by Jadharani, another by Jadharani. And this is one of the earliest ones that Prabhupada had Jadharani draw, paint. This is painted from a photograph. And there's a photograph of Prabhupada looking at the painting. And the photograph back there, you'll see the very same painting hanging in the very same spot. So that's an accurate location. This is another one by Jadharani. And this is by Indira. All 66 and 67. All painted here. Now we're going to go through the door that Prabhupada would enter when he would come for his morning and evening programs. This door, he would come through from his apartment in the back, and we'll go through to the courtyard and show you where the apartment is. This is a famous courtyard. These three windows are Prabhupada's apartment. The window on the fire escape right here in the first floor actually was the kitchen. And these two rooms were his front room. And some of the same people living in the building at that time are living here now. Prabhupada would come through that door, cross the courtyard. We saw the photograph of Brahmananda and he coming through that door, crossing this courtyard, through this door, and entering the door into the temple room. There's a very famous picture of Prabhupada standing next to a bird bath and a bird feeder, and that was taken against this wall. हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय।